Hello everyone, good morning to all and welcome to Voice of. I am Sip Sankar Hazra with you. The morning news analysis आम देखा इंडियन एक्सप्रेस रो तो आज फास्ट टॉपिक जदि देखा जोटा कि आपन बोथ ओपीएससी एंड यूपीएससी रे हेल्प करिवो जदियो आम कहचे कि हाँ खाली ओपीएससी बट एटा आपन को बोथ हैंड रे हेल्प करिवो एथरे किछि डाउट नहीं हाँ इंडियन एक्सप्रेस जोटा आम डिस्कस करूचे दैट इज भुवनेश्वर स्पेसिफिक बट हैविंग द नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज एज वेल इट विल हेल्प फॉर द व्हाट डेप्थ एनालिसिस ऑफ द टॉपिक आपन टाइम जो कंजप्शन होतला पेपर पढिबारे 2 घंटा 3 घंटा सेटा आपनकर इम्प्रूव हो एफिशिएंसी बढ़ी हाफ एन आवर मु टार्गेट करी प्रत्येक दिन एंड करने सो दैट आप एमती किसी गोटे काम कर शुणु शुणु मन रही सो आज स्टार्ट करवा आज पेपर मिशन शक्ति रू स्टार्ट करवा सो मिशन शक्ति टू प्रमोट द एसएचजी ग्रुप टू प्रमोट द व्हाट एसएचजी ग्रुप ओडिशा गवर्नमेंट रो इनिशिएटिव जदि आम देखा 2001 ना इट इज बैक टू द हिस्ट्री जदि आम देखा 2001 स्टार्ट होता मिशन शक्ति प्रोग्राम अडप्टेड होता कौन पे टू एम्पावर ना वाई ना मिशन शक्ति कौन करे एसएचजी को प्रमोट करे कि भी स्टार्ट होता 2001 रे वाई टू एम्पावर कौन पे टू एम्पावर हुम वुमेन एम्पावरमेंट हाउ मेनी पीपल्स हैव बीन जॉइंड एज ऑफ नाउ 70 lakhs women can you imagine now this is the key of success for this governance and for this person as well okay another one of the largest vote bank as well in Odisha. So जहाँ भी हो so this self help group mission shakti it was adopted in 2001 कौन पे for the empowerment of the women 70 lakhs women is been the part and SSC group मध्य ताको promote करा जाउची so here you can see the changing lives of the 70 lakhs women through the mission shakti तो mission shakti रे कौन करा जाउची self help group कराउची सेमन को empower कराउची जेमति कि they are providing like credit दिया जाउची low interest rate their product that means SSC groups are being provided through the credit सेमन को बैंक थ्रू रे institutionalize credit दिया होची ताधारा they are also establishing small आमे केबा प्रोडक्शन करूछंती सेमाने यूनिट करके प्रोडक्शन बा प्रोड्यूस करूछंती दैट प्रोड्यूस को कोन कहउची तारा मार्केटिंग मध्ये होची जहा को एक्सपोर्ट मध्ये करा जिवो एंड डोमेस्टिक मार्केट मध्ये सेल करा जिवो ओके दैट मीन्स आमे केबा मोर एंड मोर वुमेन्स मान को केमती एम्पावर करा जिवो that is what empower women empowerment and also आमे केबा total goods and service रे जति आमे केबा the GDP of the state will also increase वुमेन लिटरेसी बैंकिंग लिटरेसी बढ़ी जिवो एंड सबुठ इंपोर्टेंट कथा कि आमर जो बैंकिंग लिटरेसी रही बैंकिंग लिटरेसी ऑफ द वुमेन्स थ्रू द एसएचजी ग्रुप इज इंक्रीजिंग देयर आल्सो फ्रीडम तांकर जति आमे केबे जो फ्रीडम मध्य बढ़ुची देन आर्टिकल 19 आल्सो असर्ट थ्रू द एसएचजी ग्रुप हम कहि करबो ना ए माने घरु बाहर को आसुंती बहुत सारा मीटिंग रे जॉइन करूछंती लीडरशिप जति आमे केबा कोठी ना कोठी लीडरशिप आल्सो डेवलपिंग थ्रू द मिशन शक्ति तो कोठी ना कोठी चेंजिंग सिनेरियो रे आमे यदि देखिबा है ना तो ये मध्य तुम कही पार दैट मीन्स आउ कौन रहा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द मिशन शक्ति को इंस्टीट्यूशनलाइज कराउची दीज आर द कीवर्ड आम देखुचे है ना तो कम्युनिटी बेस जहाँ भी तुम डेवलपमेंट होची मार्केट लिंकेजेस करा जाउची अवेयरनेस रहउची ट्रांसपेरेंसी आनिबा तो इथरे कोन होची आउरी अवेयरनेस को हमें स्प्रेड करूचे ट्रांसपेरेंसी आसुची ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस सेक्टर एज वेल सो दीज थिंग्स आर कमिंग थ्रू द मिशन शक्ति तो ये मिशन शक्ति रो दैट मीन्स की वर्ड जोटा कि आपण ओपीएससी मेंस किबा ओपीएससी प्रीलिम्स रे यूपीएससी रे मध्ये लिखि परबे एग्जाम एसए रे मध्ये लिखि परबे like 325 crores of fund is being to the federation को दाइजी 6800 मिशन शक्ति that is what गृहास करा जाइछि 1 लाख इंटरेस्ट फ्री बैंक लोन that means दिया होछि अंडर द मिशन शक्ति that is what scooter योजना then 6858 crore गवर्नमेंट बिजनेस टू द एसएचजी को दिया जाउछि एसएचजी ग्रुप को फंडिंग बहुत सारा होछि 15000 करोड़ एनुअल बैंक क्रेडिट सपोर्ट दिया जाउछि 250 करोड़ एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन टू द एसएचजी ग्रुप को दियाइछि तो दैट मीन्स हम केबा सो करोड्स ऑफ मनी इज बीन स्पेंडेड फॉर द एसएचजी ग्रुप पय हम जदि देखबा करोड्स ऑफ मनी कोन ओडिशा गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ओके तो एबे तो आमे केबा आवर स्पेंडिंग बढ़िबो आगु सो एम्पावर वुमेन एम्पावर ओडिशा दैट मीन्स वुमेन लेड ओडिशा तो ये बिलीव दैट इज द ओडिशा गवर्नमेंट एजेंडा नाउ वी विल मूव टू द फ्रंट पेज ऑफ द पेपर फ्रंट पेज को आसीबा दिल्ली डिक्लेरेशन ना दिस इज वन ऑफ द ह्यूज इंपैक्ट ना इंडियास लीडरशिप द यूनिकनेस ऑफ इंडिया वुड बी नोन फ्रॉम हियर ना जदि तमे देखिबा इथरे तुमको सर कोन एमथि यूनिकनेस हे गेला ना प्राइम मिनिस्टर हियर इन दिस फोटो ये फोटो रे तुम देखि परिबो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द वर्ल्ड लीडर एट द लंच है ना देखिबा ऑफ द ग्लोबल
बायोफ्यूएल अलायंस न्यू दिल्ली एंड सैटरडे ओके दैट मीन्स आम देखा कौन है दैट मीन्स आमको कौन मिलला गोटे नुआ इनिशिएटिव ग्लोबल बायोफ्यूएल आउपर यूपीएससी 100% क्वेश्चन पचार किसी भी डाउट नहीं ग्लोबल बायोफ्यूएल अलायंस तो आप तुमको क्वेश्चन पचार जाऊँगी आउ कौन हो ना आमको आउ गोटे देखा इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मीन्स व्हाट इकोनॉमिक कॉरिडोर आसूची आउ गोटे कौन आसूची टू काउंटर द चाइनास बेल्ट एंड रूट को आसूची आउ गोटे नुआ इकोनॉमिक कॉरिडोर ताकू डिस्कस करवा कि इंडिया रू कोठे इंडिया रू मिडल ईस्ट यूरोप ये गोटे नुआ इकोनॉमिक कॉरिडोर जमती कि बेल्ट एंड रूट प्रोजेक्ट ऑफ चाइना ये गोटे तुम आसूची दैट मीन्स ये आमको इंडिया पे बहुत बढ़िया आज अच्छी तुम संडे अच्छी बट बहुत बढ़िया पेपर अच्छी तो इंडिया गल्फ यूरोपियन यूनियन टू बी लिंक्ड भाया द रेल एंड शिपिंग रूट जोटा ये देख जो आम नुआ इकोनॉमिक कॉरिडोर हम द न्यू कॉरिडोर आउटलाइन G20 विल बूस्ट द ट्रेड delivery of energy resources between India, Saudi, UAE, Jordan, Israel, European Union. That means एबे गोटे जमती बेल्ट एंड रूट प्रोजेक्ट करके रखी चाइना सेमती इंडिया G20 रे गोटे इंडिया को मध्य लिवरेज मिली कौन ना गोटे इकोनॉमिक कॉरिडोर विल डेवलप फ्रॉम इंडिया एंड इट विल एंड इन यूरोपियन Union or Europe. So that is a very big development. This is one of the biggest development of G20 and this will as well. तो ये जो तुमको देखो ये बहुत ही बढ़िया तुम देखी पारिबो है ना तो एनर्जी कॉरिडोर करा जो थे आमको दैट मीन्स जो G7 नेशन मध्य इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग करेंगे एंड दैट इट विल दैट एक्सपेडाइट द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप बाय 40%. तो दैट मीन्स आम देखा जो हाइड्रोजन कथा नहीं जाओ तुम इलेक्ट्रिसिटी वाया केबल कथा नहीं जाओ हाइड्रोजन पाइपलाइन कथा नहीं जाओ लुकिंग फॉर बियॉन्ड द ट्रांसपोर्ट दैट मीन्स आम कह एनर्जी कोऑपरेशन. सो हियर इन G20 इंडिया डिड वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर to counter the Chinese Belt and Route project as well. So these are one of the what शायद एथिपाई ही चाइना शायद माइट भी चाइना को एटा पसंद नथला जी जिनपिंग माइट भी एथिपाई आसी पारनांते कोठी न कोठी तांको आगुरु लागुथिला के बेले किछि हबार थिला इंडिया इज गोइंग टू डू सो एंड वाओ गोटे जिनस इंडिया बहुत बढ़िया करछि आई एम सो हैप्पी दैट इज व्हाट द अफ्रीकन यूनियन is now the member of G20 and that is one of the biggest achievement for India. So कोठी न कोठी जियोपॉलिटिक्स रे इंडिया रे जति हमें देखिबा जो हम प्रेजेंट सिनारियो है ना इंटरनेशनल रिलेशन रे जदि हम देखो बहुत बढ़िया इंडिया इज डूइंग सो वेल हियर कारण ये जो तुम अफ्रीकन यूनियन को बर्तमान जो G20 रे मिसिला कार प्रेसिडेंसी अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया एंड दैट इज द मोदी जीज क्रेडिट्स आल्सो दिस पर्सन द क्रेडिट टैक्स है ना आई गोस टू मुकोनी ओवर द कौन सी पर्सनल को दो पे ओके ये पूरा नेशन को हम जो क्रेडिट ना आदर बेनिफिट कौन हम जो अफ्रीकन नेशन अच्छी से इंडिया आउ टिके क्लोज होइजबे अफ्रीका होची एमिति गोटे कॉन्टिनेंट जार रिसोर्स भास्ट रिसोर्स अच्छी जोटा इंडिया डेवलपमेंट रे आगु को हेल्प हम तेणुकर कि ये बहुत बढ़िया आर्टिकल्स आज हमें देखा बहुत सारा आर्टिकल्स अच्छी ना एठी लिखाई तुमको देखो लैंडमार्क दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशंस अडॉप्टेड ना दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्टेड ऑलमोस्ट हो सारी तो डिक्लेरेशन तो आसीज बट ता पूर्व आम टे देखा डिक्लेरेशन रे कौन रहा जाऊँगी की वर्ड्स कौन दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन ऑफ G20 ना जो G20 रो डिक्लेरेशन हम ताथे को वर्ड तुम एसेंशियल ना पूर्व जी आम G20 इंडोनेशिया जोटा होता बाली से यूक्रेन वार को कंडेम करा जाइथिला देयर बट द G20 लीडर दे कंडेम द यूक्रेन वार but now here in the G20 summit in New Delhi so there what deliberately we have removed that word war the condemned and the war ताको हमें रिमूव कर देछु डिक्लेरेशन रो फाइनल जो थे ता जगह कौन कर एमती किसी आम नुआ वार्ड आनीचे जो बाली डिक्लेरेशन रे दैट मीन्स आम कह जहाँ हो नाला बा जहाँ होता ताकू पछकू छाड़ी आगू को आम जा हाँ ना जो कन्फ्लिक्ट आम थिला बा रशिया को जो कंडेम कराइला सेटा आमर ये स्थान पाइब ना जो जॉइंट डिक्लेरेशन रही कौन स्थान पाइब ना कौन सी देश फोर्स को यूज करें कौन रहा इन द लाइन विथ दैट UN चार्टर ऑल द स्टेट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम threat or use of force to seek the territorial acquisition against the territorial integrity of a sovereign nation. Okay, that means एटी हमें deliberately एटी कौन यूज कले इंडिया तार डिक्लेरेशन रे एया कहया पे जाउची कि कोनोसी गोटे देश से निजे फोर्स यूज करिवो नाही आउ कहार गोटे टेरिटोरियल को एक्विजिशन करिवो जोटो कि इंटीग्रिटी सोवरेनिटी को वायलेंट करूची सो वायलेशन करूची सो दैट इज व्हाई हियर द पॉइंट इज टू बी नोटेड आउट दैट by saying this sentence we are not what displeasing the Russia and here we are also pleasing the
what that is the Ukraine. So these sentences are very cryptically, I would say, put it into the last statement, or would be the, I would say, that is the final conclusion statement, which will comes from the G20, and India is deliberately done very well by putting this word, and that shows the capabilities of India's to force the concession in the global stage. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज रशिया एंड यूक्रेन दे कुड हैव बीन dissatisfied ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ dissatisfied ହେଇଥାନ୍ତା, ଚାଇନା dissatisfied ହେଇଥାନ୍ତା. So there could be so many of tussles where could have been immersed. But by saying this, you are achieving your target, but without harming anyone's other sentiments as well. So this is so much of practically, I would say, done. And ये टाइम रे आमे देखिबा त नुआ आसी जाउची. नाउ वी आर लिविंग दैट स्टेटमेंट व्हिच वर पुट इन द बाली रे जो स्टेटमेंट थिला ताकू छाडी के मैं आगे जाउछु. अपार्ट फ्रॉम दैट क्रेडिट आल्सो गोज टू द व्हाट टर्की एंड यूएन दैट ब्रोक द व्हाट इस्तानबुल जो आमे देखिबा टर्की यूएन मिसे की जो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव हेतला ताकू मध्य बट G20 लीडर्स माने ताकू मध्य कॉम्प्लीमेंट करिसंती एंड इंडिया मध्य कॉम्प्लीमेंट करचंती. तो जयशंकर मध्य कहिसंती मेनी डिस्कशंस आर ऑनगोइंग. बाकी जहां प्रॉब्लम अछि ग्रेन्स जो G20 लीडर्स माने डिस्कस करूची हाउ टू व्हाट एक्चुअली प्रैक्टिकल्स दैट ग्रेन डील इन द ब्लैक सी. तो ताकू मध्य करे पे जाउची. ओके, now एठी आमे तमे देखियो पीएम आइडेंटिफाई एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द भारत इन द G20. कहले जी इंडिया वर्ड को हमें रिप्लेस करी भारत वर्ड लकुचे. हियर यू कैन सी द भारत प्रेसिडेंट भी मते शेयर करूछंती. तो अफ्रीकन यूनियन जदि हमें देखबा ना इट्स अ न्यू मेंबर ऑफ द G20 दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपोर्टेंट. कारण देखो ब्रिक्स रे 6टा मेंबर 8 हैला, G20 रे गोटे मेंबर नुआ 8 हैला. तो तादर कौन आमर जो ब्रिक्स सेशन होता साउथ अफ्रिका जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाइए सेठी अफ्रीकन यूनियन रो जो लीडर थे द प्रेसिडेंट थे दैट इज व्हाट आजाली आसमोमानी इनवाइटेड करथिला. से मते मोदी जी को कहते कि हमको G20 रे गोटे सीट दिया जो आपनकर जो हेतु प्रेसिडेंट यू आर नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ द G20. so we hope something would be come out in favor of us. The African Union comprises 55 countries. Now they have representation, and that's all about from the first page. जदि हम देखबा this is very important development कम के G20 रो ना तुमको सर ए कोन पे बिकॉज़ अफ्रीका होची एमिति गोटे कॉन्टिनेंट. इट्स अ G20 जितरा में कोचे ग्लोबल रो 20 मोस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज. सो why not it would be what inclusive if you are not putting on the same page G20 रे जदि हम same page रे if we are not putting the African Union into the same page of G20, then what's exactly that meaning would be? That meanings that would not be meaningful because you are living in such a large chunk of the continent, an African nation which could give you better. कारण G20 अगर हम यहाँ पे देखें तो G20 के अगर अफ्रीका को यहाँ पे हटा देना, अगर अफ्रीका को नहीं भी मिला दे इसमें, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो नहीं हो पाएगा. ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना पड़ेगा. ओके, सो दैट इज व्हाई आवर टारगेट इज दैट टू ब्रिंग द अफ्रीका इनटू द टेबल G20 and such a huge continent, huge resource, so many of peoples are living there, poverty also, malnutrition, so that will improve the economy of the continent as well. So okay, and it will deliberately, India will enhance its what I would say bilateral relation and the international relation with the African countries, where India can downplay the China by doing such kind of initiative. तो ये बहुत बढ़िया हमें देखिबा. ना तुम कोणार्क पर क्वेश्चन आसी पारे बिकॉज G20 समिट रे कोणार्क रो व्हील को देखौछंती प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बाइडेन को. दैट्स द ब्यूटी ऑफ ओडिशा. कोणार्क इज द सिंबल ऑफ Odisha, the sun temple situated on the shore of Bay of Bengal, and its wheel is the world-class wheel, the only UNESCO heritage site in Odisha. तो आपको मध्य में आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाए है ना, आर्ट एंड कल्चर पढ़ी भी तुमको आगु को जाइए जोटा हमर फिजिकल क्लासेस चली. नाउ विल मूव्स टू द मोरक्को. एबे हमें मोरक्को को आसीबा ना. देखो मोरक्को रे वन ऑफ द लास्ट 100 इयर्स रे हमें देखबा लास्ट 120 इयर्स रे ऐसे मतलब भयंकर अर्थक्वेक कभी नहीं हुआ मोरक्को पे. दिस टाइम मोरक्को में जो अर्थक्वेक हुआ है ना वो इट वाज 6.8 इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिचेस्ट स्केल पे था मोरक्को पे हुआ है. इन द लास्ट 120 इयर्स मोरक्को नेवर एक्सपीरियंस्ड सच ए devastated earthquake. Now this time it experienced. So that is 6.8 and more than thousands people died. Then what it was, अगर हम यहाँ पे देखें कि what was the epicenter was around 0 to 70 kilometer below the ground, and it is believed in the Atlas range, in the Atlas, one of the that is the fold mountain range which is situated in the Morocco,
ठुने कि हम देखा टुना से जाए तो आटलास माउंटेन रे बिलीव करा जाए तार जे एपिसेंटर आटलास माउंटेन थिला तुमको सर जदि एठी हजार हजार लोक मरिचंती है ना एबे इमरजेंसी सिचुएशन टाइप रो चली सी बहुत सारा लोक ट्रैप हे कि अछंती बारेड हे कि अछंती ओके तो इसमें अगर हम देखें कि व्हाट वुड बी द नाउ obviously हमें दिखेगा कि that earthquake is because of the African plate. So African plate and meeting off with Eurasian plate. So here the cause of Morocco earthquake, the cause of Morocco earthquake is that the striking African plate is going below or subducting below the Eurasian plate. So यदि मतलब अगर हम यहाँ पे if we go through the plate tectonic, here the African plate is subducting below the what Eurasian plate. Sorry, it would be yes Eurasian plate. So that is the region, and the collision of the both plate will lead to the some parts is subducting, and there is also so subduction is going on. There is no collision. Subduction is still going on in the African plate, which is the denser as compared to the Eurasian plate. So African plate is subducting below Eurasian plate. So that is the reason for the earthquake. That is the reason for the earthquake. Okay, fine. So earthquake, what happens to the Morocco? That is the region that African plate is subducting below the Eurasian plate. So because of that, the earthquake took place. Epicenter was Atlas Mountain, south of Marrakesh. Okay, so that was the epicenter. Thousands of people died. Okay, now moves to the other issues. Now Vitarkanika. So this is very article, very much important article, environmental. That means it will paper 3. So it would be paper 3, and also this Morocco crisis also paper 3 disaster management, and paper 1 earthquake. So there this topic could be related to the paper 3 and paper 1 as well of the GS, the general paper, general studies. Now Vitarkanika will comes under the paper 3 environment, GS paper 3 environment पे आ जाएगा. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है देखते हैं. तो ऑथर होते हैं शिवा महांती. सो दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट हाउ क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू इम्पैक्ट द भितरकनिका. सो अगर हम आप लोग को बता के रखें कि जो भितरकनिका, दैट भितरकनिका इज द ओनली वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, एंड उड़ीसा का ओनली I would say one of the most renowned national park of Odisha, known for the crocodiles. 3 types of crocodiles यहाँ पे दिखता है. मगर, here you will find the मगर, घड़ियाल and salt water crocodiles. So this is the only national parks in the world and in India where 3 types of crocodile species are found: मगर, घड़ियाल and salt water crocodiles. So 3 species of crocodile found here. You can see the that is the what that is what that is the saltwater crocodiles. Here you can see the saltwater crocodiles. Its size little bit smaller. Their size is smaller as compared to the magar. Magar जो होता है that would be large one. And okay, the size on the basis of if you go through the magar would be generally the large crocodiles. And the saltwater crocodiles, they are generally small in size, but they are very clever as compared to the magar. Now the season have grown hotter. What happens? What the author is saying? The author is saying that the temperature is getting more hotter. That it would be more hotter, more wet. That is what wetter and extreme. So temperature is going to be extreme here because of the climate change. As the climate change, the temperature is changing. The mangrove vegetation is stressed. Now what will happen if there would be more temperature? Okay, what will happen? Because there would be but hotter. The seasons are grown into the hotter. The days are rainier than ever. There would be more rainfall. There would be dotted storm surges as well. So Vitarkanika is facing problems like heat waves. Vitarkanika is facing like the storm surges, like tropical cyclones, flood as well. Okay, so a bit of chills anymore. That means it does not have a bit of chills anymore. That means Vitarkanika is a tension area. Now the vegetation, natural vegetation are stressed because of the pollution. Now the flow of the fresh water is reducing the stress. That means Vitarkanika में जो प्रॉब्लम है कि what are the problems of Vitarkanika? एक तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है. दूसरा प्रॉब्लम है यहाँ का जो स्टॉर्म सर्ज, जैसे कि आपका मतलब जो क्या होते हैं साइक्लोन हो गया, ज़्यादातर स्टॉर्म सर्ज आ रहे हैं. जो फ्रेश वाटर जो रिवर जाते हैं हमारे पे ब्राह्मणी एंड बैतरणी, 2 rivers that runs to the Vitarkanika, their water discharge is also reducing. वाटर में पॉल्यूशन बढ़ रहा है.
Okay, and the olive ridley turtles, they're known for the what that is what rookery, that is the rookeries. Olive riddle turtles who nest there, their nesting would be enough problem. So भितरकनिका जो vulnerability इसका जो problems है ना because of the and also the that means I would say what because of the climate change, it's all facing the problems from the all side. So changing of climate change, crocodiles and olive riddle turtles, so they are what I would say that means अगर हम यहाँ पे भी देखिए इनका भी प्रॉब्लम हो रहा है तो टेम्परेचर दैट मीन्स द टेम्परेचर इज व्हाट आई वुड से द स्टडी क्लाइमेट्रिक्स statement Vitarkanika mangroves Odisha devise a climate change function as temperature rises the precipitation extreme event like the sea level rise vulnerabilities and the vertical wetland that is what critical wetland system and various factor. सो क्लाइमेट चेंज सम स्टडीज़ ये कहता है कि जो भितरकनिका का जो मैंग्रोव स्पीसीज है उसका भी उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है कहीं ना कहीं वो जो मैंग्रोव स्पीसीज का ग्रोथ है वो रिट्रैक्ट हो रहा है जो एंडेमिक स्पीसीज है बहुत सारे यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज जैसे कि आप देख सकते हो 55 आउट ऑफ 58 इंडियन मैंग्रोव स्पीसीज आर एंडेमिक टू द इकोसिस्टम। आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जो डेटा है कि दिस डेटा सिग्निफाइज हाउ इम्पोर्टेंट दिस इकोसिस्टम फॉर यू एंड फॉर ओडिशा एज वेल। So out of 58 endemic species, 55 are they are confined to this place. That shows its but richness, the species richness, and I would say the conserve why it need to be its own conservation. The temperature is यहाँ पे दिन मतलब as the season passes on, as the year passes on, the temperature is increasing. The average temperature jumps to 29.6 degree from the 27.6. The 2 degree temperature has there is a jump in the temperature as the temperature is rising. There would be extreme season like the limited rainfall, high temperature. So that will affect the what species, flora and fauna of the Vitarkanika. So what in short, so the temperature is rising. Summer is now more hotter. Sea level is changing. So the fresh water drains to that wetland is what also decreasing. रिवर लाइक ब्राह्मणी एंड बैतरणी जैसे कि अभी अभी मैंने बोला था कि इनका जो फ्लो था ना वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है. सो बिकॉज ऑफ माइट बी बिकॉज ऑफ द लेस monsoon as well. The catchment area continuously that fresh to the fresh water that is decreasing and the catchment area also that is also faced problems for the ecological problem यहाँ पे भी आ रहा है. सो दैट मीन्स यहाँ पे रेनफॉल भी हम देखें कि जो चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न ये भी दिखने मिल रहा है. तो एवरेज दैट मीन टेम्परेचर भी हम देख रहे हैं समर पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ज़्यादा गर्मी होने लग रहा है जो कि पहले नहीं होता था. सो दैट मीन्स विंटर्स आर नेचुरली विल फॉलो स्विट the warmer with the what temperature making and temperature is increasing. Then changing rainfall trend भी यहाँ पे देखते हैं कि last 25 years में report says that changing rainfall because of the what climate change. Okay, so that means in the next 25 years, okay, the report finds that the change in the rainfall's pattern thanks to the climate change impact. During the monsoon, the total precipitation is likely to increase by the what 3.9%. So temperature, that means rainfall is going to increase. Okay, but during the June and October period, the rainfall will rise by 48 to 3 mm, that is what millimeters. तो ये यहाँ पे बोला गया कि जो रेनफॉल है ना यहाँ पे धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेनफॉल बढ़ेगा. लेकिन समर में क्या होगा, जो फरवरी से लेकर मई तक होगा, यहाँ पे प्रोजेक्टेड क्या है कि रेनफॉल वहाँ पे थोड़ा भी बढ़ जाएगा, जो कि 13 पॉइंट यहाँ पे भी रेनफॉल बढ़ जाएगा. तो रेनफॉल यहाँ पे बढ़ रहा है, बाकी टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, रेनफॉल भी बढ़ रहा है, ये हमें इतना चाहिए. इम्पैक्ट ऑफ मैंग्रोव, क्या मैंग्रोव के ऊपर इम्पैक्ट देखेंगे तो उसका जो डाइवर्सिटी वो कम हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, फ्रेश वाटर को जब फ्लो वो कम हो रहा है, एनक्रोचमेंट ज़्यादा हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, हाइड्रोलॉजिकल रेजिम चेंज हो रहा है यहाँ पे. सो दैट इज द व्हाट यहाँ पे जो चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हमें देखने मिल रहा है. तो उसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो आपका जो प्राइमरी जो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी था, जो प्रोडक्शन ऑफ दैट I would say what the wetland that will also decrease. So what happens, तो ଏଠି କ'ଣ ହେବ कि मैंग्रोव ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା तो ये प्रोब्लेम्स हमको बहुत सारा देखा होची कि जमती फ्रेश वाटर एठी जति ड्रेन होतला से कमी जाउची, टेम्परेचर बढ़ुची, रेनफॉल बढ़िबो ना. मैंग्रोव सबुठी बहुत इंपोर्टेंट प्रॉब्लम तुम लिखि परबो. ए क्रोकोडाइल्स न्यूज आजकल बहुत रोज कि मैन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ताको मध्ये तुम एठी आड करि परिबो. वाइल्ड बोर कथा नै त रेप्टाइल्स कथा नै जो ए माने कोन करछन ना, ए मानको एक तो देखो कोस्टल इरोजन होची, तो ए मानकर दैट मीन्स संख्या मध्ये कमियो कोस्टल इरोजन जोगो आ ता द्वारा मैन एंड वाइल्ड लाइफ
ऊपर प्रेशर आसूची क्रोकोडाइल्स है ना मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट जोटा मुझे तुमको डिस्कस करूली मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट ये देखा सी लेवल राइज हो लोकल कम्युनिटीज माइग्रेट करके पलाऊँ बहुत सारा लोकल कम्युनिटीज एमने माइग्रेट कर जाऊँच कहीं आउ कौन कर जो अच्छी क्लाइमेट चेंज जो प्रॉब्लम हो कोस्टल एरिया सब खाई खाई जाऊँगी जोटी से माछ धरिकी चलुते माछ धरी पारना कहीं क्रोकोडाइल संख्या बढ़ीगला बुझीपार तो ये प्रॉब्लम हो तो एक्सट्रीम इवेंट आसूसी से आम टूरिज्म सेकेंडरी लाइवलीहुड अच्छी आ टूरिज्म को आम प्रमोट कर होना कहीं आजिकल भितरकनिका एमती होगी आसला कि साइक्लोन कथा नहीं जाओ इवन जो क्रोकोडाइल बारंबार लोक को खाऊँ ये न्यूज जो आसो ना तो तुम टूरिज्म कौटी ना कौटी रिट्राक्ट हम तो ये थी भितरकनिका गोटे लंबा आर्टिकल थिला है ना इंपोर्टेंट पॉइंट को आम खाली डिस्कस करके तार एसेंस बाहर कराइला कि भितरकनिकार प्रॉब्लम्स कौन बहुत बढ़िया आर्टिकल्स लिखिं न बाकी तुम देखिपारे ओडिशा रे डेफिसिट रेनफॉल होती कहुच्छे सेप्टेम्बर किसी रेनफॉल लो प्रेशर द्वारा होगी मैनेज कर बिलीव करा तेना आम आगू को जावा सो ना इम्पोर्टेंट न्यूज जदि आम देखा तुम देख कि दैट इज द जियोपोलिटिक्स ऑफ चाइना तो ये जो चाइनाटा देखा न्यू वर्ल्ड ऑफ द चाइना ऑफ द पॉलिटिक्स एंड द जियोपोलिटिक्स तो ठीक अच्छे तो यहाँ को आम देखा कौन आर्टिकल्स को आज आउटे पछक देखा तो बाकी ऋषि सनक वर्सेस हिंदू ऋषि सनक वर्सेस ब्रिटिश सन दैट मीन्स हिंदी ऋषि वर्सेस ब्रिटिश सनक तो ताको आम तो दैट मीन्स ये पॉलिटिकल पर्सनल जो आर्टिकल्स को ये देखापी चाहूनी हाँ आम ब्रिटिश यूके रिलेशन को पढ़ी पार IR पार्ट रे ओके तो बाकी हमें ये प्री पोल्स बुझीपार दैट मीन्स प्री पे फॉर द ऑल्स योर ट्रबल्स तो आम देखा से पर देखा सेटा को आम टिके आज पर देखा बट यहाँ को आम देखा मोदी हाज 1-on-1 विथ सनक एंड दैट इज क्रिसिदा एंड मेलोनी तो एम सहित 1-on-1 मीटिंग है ना तो दैट मीन्स डेली डिक्लेरेशन आम देखा कौन कौन टॉपिक देता डेली डिक्लेरेशन रे देखा कौन कौन रोचे यूक्रेन वार को आम डेली डिक्लेरेशन रही टेरोरिज्म रही रिलीजन रही ग्लोबल इकोनॉमी रही क्रॉस बॉर्डर पेमेंट रही क्लाइमेट चेंज कथा देख एग्रीकल्चर जेंडर करप्शन स्किल एंड द क्रिप्टो एसेट these all have educations so these are the points that will reflect the Delhi declaration so Delhi declaration रे हमें कौन देखा importance point again हमें देखा the African that India's G20 presidency is a landmark in many ways जमती कि हमें देखा कि Delhi declaration रे हमें कौन करते African Union को वर्तमान permanent member कर दिले significance forward for the clean energy हमें देखते food safety and announcement of the India मिडल ईस्ट जो हमारे इकोनॉमिक बा यूरोपियन जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर कथा हमें डिस्कस करते तो ये जो कीवर्ड पूरा तुम आर्टिकल को जाऊनी पास मुझे खाली कह कि जो डिक्लेरेशन कीवर्ड कौन था जमी यूक्रेन वार को आम से ड्रप करदे टेरोरिज्म को केमती खत्म करा है ना ताकू जो जेनोफोबिया रासिज्म रही नेम ऑफ द रिलीजन ताकू आम केमती खत्म करवा रिलीजन्स मतलब अगेंस्ट जो आम जो प्रेजुडाइसेस रही है ना ताकू आम खत्म करवा ग्लोबल इकोनॉमी को प्रमोट करवा दैट मीन्स द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट दैट मीन्स आम कह फास्टर करवा चीपर करवा है ना देन आम क्लाइमेट्स ऊपर आम क्लीन एंड सुइटेबल या देखा तो क्लाइमेट चेंज को केमती आम रोक पार जहाँ इनिशिएटिव दरकार देखा एग्रीकल्चर को केमती ओपन फेयर एंड सस्टेनेबल करवा तो जेंडर दीज आर द सम की वर्ड्स जहाँ को आम कहीपर ना ये रहा तुम मेजर पॉइंट जो रही न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर टू कनेक्ट द एशिया यूरोप एंड USA बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट एथिरे कौन हम देख है ना ये दुईटा पॉइंट तुम बहुत इंपोर्टेंट देख ए कौन हम इंडिया USA साउदी अरब UAE फ्रांस जर्मनी इटली यूरोपियन यूनियन ऑन सैटरडे साइंड कौन कर देख MOU टू डेभलप ए न्यू इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर टू काउंटर द चाइना तो ये तो डायरेक्टली से कहना काउंटर कर चाइना को दैट मीन्स ये कहुच्छे कि दिस विल दैट वुड बी ए न्यू कॉरिडोर ओपनिंग ऑफ सो हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तो यहाँ कह दैट मीन्स ये कौन कौन रही देख इंडिया UAE साउदी अरब यूरोपियन यूनियन फ्रांस इटली जर्मनी USA बहुत बढ़िया रही इनिशिएटिव तो ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव रहा आम कह आप बहुत आगुरी कम चलती जमी तुम देखिपर द इनिशियल डिस्कसन एट मीटिंग ऑफ NAS इन साउदी अरब मे मसर चलता जो थे अजित दोवाल जाते से चली है ना
तो ये आम बहुत इंपोर्टेंट करेक्टर आ द्वारा कौन बेनिफिट हम इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी हो पार इंडिया एक्सपोर्ट बढ़ इंडिया इंपोर्ट एंड ट्रेड एंड बिजनेस आम जब कहवा मिडल ईस्ट सहित कनेक्शन बढ़ एनर्जी सफिशिएंट हो पार एफडीए अधिक फ्लो कर सो दिस वुड बी ए वेरी इंपोर्टेंट इनिशिएटिव फॉर द इंडिया सो दिस इज ए रियल बिग डील जो देखा वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर दैट्स द फोकस ऑफ आवर समिट ये कह कथा जो बाइडेन कही एंड देखिपर तुम किए कौन कही कोटेशन को लेकिन सो दिस दैट मीन्स इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन यूनियन को जो कनेक्ट करुच्ची ये जो तुम सेपरेट कॉरिडोर होची पूरा तुम अरेबियन सी रू देखा गल्फ टू लेकिन नॉर्दर्न कॉरिडोर को कनेक्ट कर ये बहुत इंपोर्टेंट दैट शोज योर जियो पॉलिटिक्स ओके दैट मीन्स ए द कॉरिडोर विल सिक्योर द व्हाट रीजनल सप्लाई चेन को कर इंक्रीज द ट्रेड को बढ़ाइब इंप्रूव द ट्रेड एंड फैसिलिटीज को बढ़ाइब इन्वेस्टमेंट बढ़ रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी बढ़ाइब इकोनॉमिक यूनिटी आसब जॉब जनरेट हम लोअर ग्रीन हाउस एमिशन हम रिजल्टिंग इनटू द व्हाट ट्रांसफॉर्मेटिव इंटीग्रेशन ऑफ द एशिया यूरोप एंड मिडल ईस्ट तो गोटे इंटीग्रेशन हम एशिया यूरोप एंड मिडल ईस्ट इंटीग्रेशन हो जोटा कि बहुत बढ़िया आर्टिकल्स अच्छे आज तुम मानी आपको शॉर्ट नोट गोटे बनईदेव देन कम्स टू द यूएस ब्राजिल जॉइन इंडिया लेड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ये तो मस्ट न्यूज यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन 100% किसी भी डाउट नहीं ये दुईटा क्वेश्चन रु तुमको मेन्स रे यूपीएससी ओपीएससी पचार इधर यूपीएससी मेन्स रे तो पचार ही पचार मेन्स रे जदि न पचार यूपीएससी प्रिलिम रे पक्का नेक्स्ट ईयर पचार ओपीएससी रे एक्सपेक्ट करें कि तुम G20 आउटकम हम से तुम आसो कौटी मेन्स रे आसो एक्सपेक्ट कराऊँगी कहीं प्रिलिम रो आसीपर नहीं ऑलरेडी बाय द रीडिंग ऑफ द न्यूज और गोइंग थ्रू द एनालिसिस ऑफ द न्यूज ओपीएससी क्वेश्चन बनी सारी तेणुक देखा द नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे अनाउंस द लॉन्च ऑफ द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इनवाइटेड other G20 states and the countries to join the initiatives. So India led initiatives which United States and the Brazil has announced its members. So USA and Brazil they announced their memberships. है ना दैट मीन्स ग्लोबल फ्यूएल आम कह कौन कर बायोफ्यूएल अलायंस बुझीपार एथेर कौन कर प्रपोजल इज टू इनवाइट द ग्लोबल लेवल टू टेक द इथानल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल अप टू 20%. दैट मीन्स प्रपोजल कौन टू टेक एन इनिशिएटिव ग्लोबल लेवल इंडिया तो निजर इनिशिएटिव अच्छी कि इथानल ब्लेंडिंग पॉलिसी 2018 रे जोटा आसीथिला बाय 2030 वी विल ब्लेंड 20% ऑफ द इथानल इन द पेट्रोलियम बाय दैट वी विल रिड्यूस द ग्रीन हाउस प्रोडक्शन एंड इट वुड बी ऑल्सो रिसाइक्लिंग इफेक्ट रहिबो पॉल्यूशन कमिबो सो दैट वाज इंडियाज ओन आई वुड से व्हाट इथानल पॉलिसी बट नाउ दैट वुड बी ग्लोबलाइज्ड ताको कौन कह लोकल फॉर वोकल कॉन्सेप्ट ताको ग्लोबलाइज करा इट्स ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट वुड बी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एनिमल डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल बायो वेस्ट वुड बी नाउ यूज्ड एज अ बायोफ्यूल ऊपर कहूँ गोटे आम बनईदेवा शॉर्ट वीडियो. Now, according to the government, so far 19 countries and the 12 international organizations have already expressed their that is willingness to join the global biofuel alliance. This is very important. Okay, ये बहुत important articles रहेगा. Announce that is the GBA showcase. ये बहुत बढ़िया रहेगा. That is the voice of global south and that represent what voice of global south and this is one of the best articles I have gone through today's. This one and this one is very important and also that is the keyword. This is also so these are going to the mains question तुमको रहेगा. Satellite mission for the climate मध्य रहिबो है G20 mission गोटे कह G20 satellite mission for the environment and the climate change observation आपको भी आज मार्क कर दियो ये तमरो मध्य क्वेश्चन होको चाहूची. बेनिफिट्स ऑल द आम कह G20 ऑल द मेंबर्स को मध्य बेनिफिट रहिबो तो रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट जहाँ भी रहिबो बाकी आउ किछि मु तको आर सेकंड पार्ट नहीं कि आउ टिके डिस्कस करबे कना बहुत लेंदी हिजबो तो आर सेकंड पार्ट मध्य हम टिके डिस्कस करबा एडिटोरियल एंड द सेकंड पार्ट तो आपको आउ टिके देखिबा इतरे कौन सी इंपोर्टेंट न्यूज़. ओके लास्ट न्यूज़ को आम जा तुम बाकी मुझे तुमको ऑलरेडी कहीदे कि जो मोरक्को रे अर्थक्वेक होती ये अर्थक्वेक कौन होती बिकज ऑफ द मोके अफ्रिकन प्लेट इज सबडक्टिंग बिलो द यूरेशियन प्लेट तो दैट इज वाई अर्थक्वेक हैज स्ट्रक जोटा कि लास्ट 120 इयर्स ये अर्थक्वेक हो नाला तो रिचर स्केल इट वाज 6.8 दैट मीन्स आम मैग्निट्यूड्स था शायद इफ आई एम करेक्ट एस आई एम करेक्ट 70 किलोमीटर्स बिलो तो आम कह कौटी तुम हॉटस्पॉट जहाँ एफिशिएंटर कहे इट वाज अटलास माउंटेन तो अटलास माउंटेन को मध्य मैप रे देखीदेव तुम मैंने ठीक अच्छे बाकी नॉर्थ कोरिया तार होस्ट करुच्ची नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल्स को आम जा. ओके तो देख इंडिया तो G20 प्रेसिडेंसी करुच्ची एंड ग्लोबल crypto policy that means G20 presidency at the lays down the foundation for the global crypto
पॉलिसी नहीं जो ग्लोबल क्रिप्टो पॉलिसी दैट मीन्स आम देखा फ्रेमवर्क फॉर द क्रिप्टो आसेट में गोटे पॉलिसी करा जो थे कि आम देखा इमर्जेंस ऑफ द ग्लोबल पुश फॉर द क्लियर पॉलिसी रिगार्डिंग द क्रिप्टो आसेट अंडर द इंडिया लीडरशिप इंडिकेटिंग दैट ए ग्लोबल कंसेशन ऑन द मैटर ऑफ और टेकिंग द सेप तो इंडिया कहवा कथा जो आमर जो डिजिटल बा क्रिप्टो आसेट अच्छी जहाँ को आम कहे कौन क्रिप्टो आसेट तापर गोटे नुआ पॉलिसी होगा दरकार दैट वुड बी फेयर एनफ होगा दरकार रेगुलेटरी बॉडी रहा दरकार तो या पर गोटे कराई है ना तो आपको नेक्स्ट पार्ट में तुमको डिस्कस कर दूसरी आज तो फास्ट पार्ट में एति डिस्कसन रखुची सेकेंड पार्ट को आसबि कहना सेकेंड पार्ट आहरी किसी इंपोर्टेंट अच्छी जमी जीएम क्रॉप्स वगैरह अच्छी तो सेकेंड पार्ट में डिस्कस करी फास्ट पार्ट को ये रखुची so take care now I will come back after some time